Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Have a Thank you. seat. Thank you, sir. Thank you. सचिन आनंद। Yes, सचिन, अपना परिचय दीजिएगा। sir. I belong to Bhojpur district, Bihar. I have done my schooling from DAV Public School, Ara, and my graduation in mechanical engineering from Rajasthan Technical University, Kota. Sir, my optional subject is political science and international relations, and my hobbies include keeping a close track on development in politics and diplomacy world over. सचिन, आपने अपने हॉबी में जो लिखा है कीपिंग ट्रैक ऑन पॉलिटिक्स, क्या करते हैं इसमें? Sir, I love to be aware about the recent happenings, especially in politics and international relations around the world. कहीं सहेजते हैं चीज़ों को कि देखते और पढ़ते हैं और उससे आनंद की प्राप्ति करते हैं, क्या करते हैं? Sir, I do not collect the information, but I love to be be aware about the happenings around me. आपने बीपीएससी का रिटन एग्जामिनेशन क्लियर किया है। Yes, sir. उसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, तब इंटरव्यू के अगले चरण में आप जा रहे हैं। Yes, sir. उसमें अनिवार्य विषय कौन कौन थे? Sir, there was GS1, GS2 and optional paper. उसमें हिंदी नहीं था? Sir, Hindi was only qualifying. अनिवार्य था ना? Yes, sir. कंपलसरी था ना? Yes, sir. बीपीएससी में कई हजार छात्र शामिल हुए होंगे, उसमें कोई एग्जेम्प्टेड था? कुछ स्टूडेंट की हिंदी की परीक्षा नहीं देनी है? No, sir. There was not as such. वो क्यों होता है? क्यों हिंदी कंपलसरी है? क्वालिफाइंग है वो अलग चीज़ है, कंपलसरी क्यों है? I think, sir, if you are working for the state where the state language is Hindi, you must know the language. तो आपने रिटन क्वालिफाई किया, इट मीन्स कि आप क्वालिफाइंग मार्क्स के एबव आपने लाया होगा। Yes, sir. ये संभव है ना? Yes, sir. तो इसके पीछे बीपीएससी की क्या मंशा रही, क्यों रखा है? वो क्वालिफाइंग नहीं रखना चाहिए था, जब उसका मार्क्स ऐड ही नहीं होता है तो क्यों रखा गया? इसका कारण बताइए। Sir, I think one has to be well acquainted with the state language if you have to work for the people and for the administration. बीपीएससी की मंशा क्या रही है कि एक कैंडिडेट जो है बिहार के अंदर काम करना है, उसे अधिकारी बनकर करेंगे तो हिंदी जानना चाहिए, क्योंकि यह हिंदी प्रदेश है। Yes, sir. तो इससे कुछ शिक्षा आपको मिली? Yes, sir. क्या? सर, अगर हिंदी में सवाल पूछा जाए तो हिंदी में जवाब देना ज़्यादा बेहतर। ये शिक्षा मिलती है ना? यस, जरूर। क्योंकि जब वो कंपलसरी है तो रखा गया है कंपलसरी, कुछ सोच कर समझ कर ना। यस सर, आई विल टेक केयर ऑफ दिस नेक्स्ट टाइम। पॉलिटिकल साइंस आपने वैकल्पिक विषय के रूप में रखा है। प्लेटो का आदर्श राजा का सिद्धांत क्या था? सर, प्लेटो ने सबसे पहले एक फिलोसोफर किंग की थ्योरी दी थी सर। उसमें कहा था कि जो आदर्श राजा है उसको इंटेलेक्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए बाकी दो क्लास के रिस्पेक्ट में सर। नहीं, क्या कुछ क्राइटेरिया था उसके लिए? कुछ कंपल्सन था, कुछ नॉर्म था आइडियल किंग के बारे में? हाँ सर, उसके लिए था कि आदर्श राजा जो है सर उसको रिगरस ट्रेनिंग दी जाएगी, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल लर्निंग सर, 15 साल के लिए। ओनली इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग सर? एक्स्ट्रा होगी, बाकी दो क्लासेस से होगी सर। और भी कुछ शर्तें होंगी ना कि आदर्श राजा शादी नहीं करेगा, बच्चे पैदा नहीं करेगा, कुछ इस तरह की भी बातें रही हैं। यस सर, ये भी थी। तो आप या तो भूल रहे हैं या फिर कम बता रहे हैं। सर, आई नीड टू स्टडी ऑन इट। बाद में और भी बहुत सारे थिंकर हुए हैं पॉलिटिकल थिंकिंग में। बाद के थिंकर में से एक बड़े विख्यात थिंकर रहे हैं जिन्होंने प्लेटो के इस सिद्धांत को यूटोपियन कंसेप्ट बताया और उसे खारिज कर दिया कि ये पॉसिबल ही नहीं है। वो कौन थिंकर थे और उनका क्या कहना था आइडियल किंग के बारे में? सर, मेरे हिसाब से सर 2-3 फिलोसोफर ने प्लेटो के जो थ्योरी थी उसको यूटोपियन कहा है। जैसे कि कार्ल पॉपर ने कहा है सर कि प्लेटो की जो थ्योरी है वो पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में।
और बहुत हद तक सर एरिस्टोटल ने भी उनके थ्योरी को सर नकारा है। मैकियावेली के एक सिद्धांत जो बड़े प्रचलित है पॉलिटिकल साइंस में, के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। सर ही इज ऑफन कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ रियलिस्ट political thought, especially in international relations. And for him, morality should not be considered as only basis for judging a king. Please. Sachin, HK said that war is the failure of diplomacy. Yes, sir. How do you react to this? Sir, I think this is true to a very large extent. Sir. War is absolutely a failure of diplomacy. Whenever two countries stop talking or stop their relations, especially in cultural or people to people or economic sense, there is very high chances that they may go to war. In this light, how do you view India's withdrawal of its diplomats from Canada and vice versa? Sir, I think India's recalling of diplomats from Canada was a very right step, because sir, the recent Canadian government was making an insinuation that an Indian agent was involved in killing the Canadian national at their soil, which was completely based on their internal vote bank politics, given the election is very near in Canada. Yeah, Canadian press has already admitted this fact that it was only intel Yes, sir. information. It is not based on proofs. What about the agency which gave this intel information to Canada? I think its name is CSIS, Canadian Security Intelligence Agency. Sir. What is this 5I? Sir, it is an intelligence sharing agency of Anglosphere countries, namely US, UK, New Zealand, Canada, and Australia, which generally do share intelligence and other information. This involvement is not in between this widening the gulf between India and Canada. Yes, sir, of course, because they are indirectly backing the hypothesis of Canada, which is completely based on baseless and false allegations. It is seen recently Yes, sir. in warfare, that drones are playing very pivotal role, very decisive role, much different from the traditional warfare. What are those significant changes you see? Sir, I think drones has completely changed the nature of warfare, especially the war which has been fought in the last 10 to 12 years. And the cases of illegal weapon dropping, especially at Punjab border, was also seen in case of drone. And similarly at Manipur, the drone was also seen to be playing a very effective role in fanning up the conspiracy and killing there. What are the benefits of using these drones instead of using warplanes? Yes, sir. I think it has myriad of application, ranging from agriculture to administration to other fields, sir. How many people, how many leaders, or how many terrorists that countries, they killed them through this drone, using drones technology? Remember any names, famous names? So may I take some seconds? Yes, go ahead. So one Iranian general was killed by US, but I am not able to recall the name right now, sir. Iranian or Hezbollah? Sir, Hassan Nasrallah, I think it's. And before him also, many generals were killed, many terrorists were killed even by USA also. Yes, Can you name any terrorist who has been killed by using drones by United States? So in recent, I can recall the name of Sir Qasim Soleimani, sir, I think. Yeah, that's true. But I am not saying. So, what is the one leverage of using drones? Suppose if you use planes instead of drones, planes, they generally create sounds. It takes time also. The accuracy is also not there. So, use of drones are very vital in warfare these days. Okay. So tell me, with which country India entered
very, very important agreement regarding drones? So I think in the recent times we have decided to purchase MQ-9B Reaper drones from US. Similarly, we have also purchased drone named Heron from Israel. Okay. How this election in United States, the presidency elections take place in United States? Sir, their election, they do follow the presidential form of governance at United States, and there first there is primaries, then there is caucuses, and after that the representative will choose the president among themselves. Okay. Sachin, you are a mechanical engineer. Yes, sir. What do you study in mechanical engineering? What is the applicability of mechanical engineering in day-to-day life? Sir, I can What say, do you study? Sir, I can say, sir, there are various fields of mechanical engineering which can be used in various day-to-day life. Especially, sir, I have studied about mechatronics, which is the amalgam of mechanics and electronics. So the drones, the UAVs, and other electrical signaling comes under this category only, sir. A engine works on which principle? Suppose a four-stroke engine I am talking about. Yes, sir. Sir, What is the principle? Sir, it works on an auto cycle principle. What is that auto cycle? Sir, auto cycle completes generally in four steps. First there is compression, then there is suction, then there is power, and then there is exhaust. Just it starts with compression. What, sir? It starts with compression. Sir, first there is injection of fuel. After that there will be the fuel will be That should be there, na? yes, sir, sorry. Yes. First there will be injection of fuel in cylinder, and then the fuel will be compressed to requisite level of pressure so that it can be ignited, and then there is suction, then there is power stroke where energy is produced, and then there is exhaust where the gases are released. Which engine is more efficient, four-stroke engine or two-stroke engine? Sir, Why? sir, because there is a more a number of revolutions per cycles. More? More number of revolutions per cycles. So what? What it will take place? So I think, sir, its efficiency is more. Efficiency is always related with fuel consumption. Yes, sir. A burning of fuel is much more. That will be, in two-stroke, why does it produce more cycles as per your terms? Sorry, sir, I am not able to recall which one is. So, chaliye. What is basic difference between electric engineering and electronic engineering? You have also read electronic engineering, na? A special branch as well. What is basic difference between electrical engineering and electronic engineering? Sir, most of the equipments of the electrical engineering works on Ohm's law, whereas most of the equipments of the electronics do not work on Ohm's law. Do not find what is Ohm's law? Sir, Ohm's law states that the voltage is directly proportional to the current when resistance is constant. That will exist everywhere. Sir, You don't use any current in this electronic equipments? sir, in most of the electronics equipment, we do not, the Ohm's law is not followed. We have diode or we have different components. Ohm's law related to voltage and current relationship, Yes, sir. isn't it? Yes, sir. So this is not followed in this electronic communication equipment. So I was saying in electronics and communication equipment, the relationship between voltage and current is not proportional, which means on increasing voltage, it is not necessary that current will increase. How? So because they have different mechanisms, sir. How? That is what is that? What that mechanism is? You use diode, isn't it? Yes, sir. They work on And diode. you use semiconductors. Yes, sir. Semiconductors and diodes. What is semiconductor? So semiconductors are those materials which have resistance between insulator and conductors. The basic difference between electrical engineer and electronic engineer, still you have not mentioned it. You have taken pretext of Ohm's law. In electrical engineering, you deal with high voltage and high current. Yes, sir. Just reverse is the thing in the electronic things. Yes, sir. I need to study about it. It's simple. This is a simple basic difference. Anyway, what are fundamental rights granted to the Indian citizen by the Constitution of India?
Sir, fundamental rights are enshrined in Part 3 from Article 12 to 35, starting from right to equality, right against discrimination, right. No, I don't require details from you because we don't have that much of time. Yes, sir. Suppose your fundamental right has been violated and you want to file an appeal before the Honorable Supreme Court of India. Yes, sir. Can you do that? Yes, sir, it is possible under Article 32. Under Article 32. 32. What sort of, how many types of writs are entertained by the Honorable High Court? So 5 kind of writs, sir. What are those? Sir, mandamus, habeas corpus, certiorari, quo warranto, and prohibition. What is prohibition? Sir, I am not able to recall. Okay, no issue at all. What are those roaring 40s in geography? So roaring 40s are generally trade winds which flows from west to east direction in both hemisphere, north and south, but they are more stronger in southern hemisphere. Why it is called roaring? Why not silent? Silent Sir, 40s. Because its strength is much higher, higher. Why? What is the reason behind that? There must be some reason why its intensity or current is very high. Why? What is the reason? Do you have big landmass in southern hemisphere? Yes. Yes, sir, I think this is the reason, because there is no landmass, they cannot encounter any landmass or obstacle, that's why their speed is very high. Okay. Tell me the numbers of districts in North Bihar. North Bihar, sir. कितने districts हैं? How many districts we are having there? You are from South Bihar, isn't it? Yes, Ara? Yes, sir. Tell me the number of districts of South Bihar. What is the golden period in Indian history? So generally Gupta period is called as by What Williamson. is the period of Guptas? Sir, Guptas were 3rd century to 6th centuries AD. Third century. Can you precisely make it? 3rd century means. Do you remember the precise? No, sir, I am not aware of the You precise. should go through it. Yes, sir. Who established this Nalanda University? Sir, it was established by a Gupta ruler known as Kumar Gupta. When? What is the importance of Bodh Gaya in Bihar and why it is famous? Sir, Bodh Gaya is a important cultural and tourist site in Bihar. It is connected. Why? Sir, it is, Tourism comes later on. yes, sir. Why it is important? Sir, it has connection with Sir Gautam Buddha. What sort of It is connection often has said got? that at Bodh Gaya he attained enlightenment. Enlightenment. What do you mean by enlightenment? Sir, enlightenment means for me it's a discovery of self, Discovery of? oneself. Discovery of oneself. Not about the world, the truth of world. Sir, I'm not sure about this. The word Okay, intent. okay. You should know it because it is very important to the Bihar, isn't Yes, it? sir. So, Tell me the smallest river of Bihar. sir, I think it's Ajay, but I am not sure. Ajay. Yes, sir. Ajay Harwar, that side. Yes, sir. I'm not sure. Incorrect answer. Just this is last question to you. Yes, sir. Tell 3 states name which are GDP wise first, second, third in India. Maharashtra, Tamil Nadu, and Gujarat. Maharashtra, Tamil Nadu, And Gujarat. Gujarat. Good. And what is the contribution of different sectors in Bihar GDP? Sir, according to this year economic survey, agriculture contributes to 59%. 59. Yes, sir. Agriculture. Sorry. We have developed so much. Sorry, sir, it was 20%. Just you आराम से जवाब दो ना. Yes, काय के लिए हवा रहे हो? Yes, हाँ sir. बोला. 20% agriculture, manufacturing 19%, and rest 61% to. What does it reflect about the state of Bihar? भाई Pardon? यहाँ सर्विस सेंटर इतने सर्विस जो है 61% है, एग्रीकल्चर जो है वो 20% है, इंडस्ट्री 20% है. What sort of picture reflect to the Bihar? This is the last question to you. आपके नज़र में इससे क्या झलकता है? सर, इससे मेरे हिसाब से सर एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट झलकता है कि सर ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में, बट प्रोडक्टिविटी इज वेरी लेस. सो वी नीड टू. हाँ, you need to improve the agriculture. Yes, sir, agriculture productivity in and agriculture and bring more people in tertiary sector.
ओके सर। सचिन, आपके इंटरव्यू के बारे में हम लोग पैनलिस्ट आपस में विचार विमर्श करके इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, और फिर आपको फीडबैक देंगे, कुछ सजेशन भी दे सकते हैं। आप बाहर वेट कीजिएगा। What is your date of interview, Sachin? Sir, it is on 24th. 24th. Okay, you have enough time in your hand. आपको 1 मिनट के बाद बुलाते हैं। Thank you, sir. मैं कमी सर। आइए। बैठिए। सचिन, पैनल की राय है कि आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया रहा है। कुछ बातें बतानी होगी आपको। आप जानते भी होंगे आपका ये सेकेंड अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में क्या किया था? पहले अटेम्प्ट में सर मेंस 7 नंबर से नहीं हुआ था सर। मैंने पीटी आपने किया, मेंस दिया बट नहीं हुआ। हाँ सर, मेंस। उससे पहले सर इंटरव्यू दिया था। इस बार आपका मेंस हो गया है ना? यस सर। तो मेंस का एग्ज़ाम रिटन में होता है ना, यस तो वहाँ तो आपका नॉलेज रिफ्लेक्ट करता है, यस सर। तो वो तो रिफ्लेक्ट कर गया। यस सर। नॉलेज वाइज आप बहुत बढ़िया हैं। इंटरव्यू होता है पर्सनालिटी टेस्ट के रूप में कि भाई, अब चूँकि इंटरव्यू पार्ट में आप पहली बार देने जा रहे हैं इंटरव्यू, तो कुछ चीज़ आपको जानना समझना भी चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है कि आपको बिहार में नौकरी करनी है, तो बिहार के क्षेत्र के बारे में आपकी उपयोगिता सरकारी सेवा के लिए है कि नहीं है, कितने योग्य हैं आप इन सब चीज़ों में। तो 2-4 बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। मुझे लगता है आप इस नॉर्म को नहीं जानते हैं कि पैनल के मेंबर जिस भाषा में बात कर रहे हों उसी भाषा में जवाब देना है। हाँ सर, मुझे आपको आभास ये हुआ पता था? नहीं सर, बाद में आभास हुआ सर कि मुझसे गलती हुई। नहीं, वो आभास तो अभी हुआ ना, आपको पहले पता था ये चीज़? नहीं सर। हाँ, एक ये बात। दूसरा ये कि जब मेन इंटरव्यू आप देने जाएंगे तो वहाँ पैनल में 3 लोग भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। मैं एक संभावना आपको बता रहा हूँ कि संभव है कि 100% मेंबर के द्वारा आपको हिंदी में प्रश्न पूछे जाएं। आपको इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि आप जितना फ्लुएंट हैं, तो ये मत समझ लीजिए कि इस फ्लुएंसी का आपको कुछ अतिरिक्त मार्क्स वहाँ मिलने जा रहा है। आपके लैंग्वेज से कुछ एडिशनल मार्किंग होगी, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए आप। फ्लुएंसी ठीक है, बहुत बढ़िया है आपका। आप अगर हिंदी में भी बोलेंगे तो इसी स्पीड में बोलेंगे, लेकिन संभव हो सके, क्योंकि आपका इंटरव्यू 24 को है और हम लोग अभी बात 18 को कर रहे हैं, तो 5-6 दिन है। 5-6 दिन प्रैक्टिस करने से आप इसको अचीव कर सकते हैं। तो जो गति है ना, उस गति को थोड़ा सा कम कीजिए। वॉइस का लेवल आपका ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आपकी ठीक है। तो एक अंडरस्टैंडिंग होता है ना, वो बहुत बढ़िया आपकी अंडरस्टैंडिंग है। चीज़ों की जानकारी आप रखते हैं, आप विस्तार से भी रखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। नदियों में पानी रहना अच्छी बात है ना, लेकिन पानी अत्यधिक हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बाढ़। उसको अच्छा माना गया है। तो नियंत्रित रहना चाहिए ना। बराज इसीलिए बनाया जाता है, बराज में 27 गेट होते हैं कि पानी का फ्लो ठीक है, लेकिन ओवर वाटरिंग क्या होता है, उसको फ्लड कहते हैं। फिर वो मानवीय सभ्यता के लिए ये ठीक नहीं माना जाता है। तो उसी चीज़ को आप इस रूप में देखें। इंटरव्यू में आप बोलते हैं ठीक, लेकिन आपकी जो स्पीड रहती है वो तेजस से भी बढ़कर वंदे भारत या क्या क्या बहुत सारी ट्रेनें जो आ रही हैं उसमें जा रही हैं। तो डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं जो कुछ कह रहा हूँ आपके करियर के उस पॉइंट के लिए कह रहा हूँ जो आपके लिए लाभदायक होगा। तो इसे आप थोड़ा नियंत्रित करेंगे, ठीक है? कॉन्फिडेंस लेवल आपका ठीक है, आई कांटेक्ट
ठीक है, ब्लिंकिंग ऑफ आई कम होना चाहिए, जो थोड़ा ज़्यादा है आपका। हाँ सर, वो मैंने भी देखा। हाँ, वो क्यों ज़्यादा है वो आप जाने, हो सकता है बचपन से ही ऐसा रहा हो, लेकिन थोड़ा नर्वसनेस। ट्राई योर लेवल बेस्ट टू ब्लिंक स्लो, स्लो। नॉट एज रैपिडली एज यू डू, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा ये कीजिए, तो नियंत्रित करना आपके हाथ में है, तो ब्रश अप करने की ज़रूरत है। अदरवाइज यू आर एक्सीलेंट, और आपका ये इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हुआ। हम लोग जो मार्क यहाँ देते हैं, आपको बहुत अच्छा मार्क देने जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाए रखिए। और एक चीज़ पर सरकार ने अभी तक टैक्स नहीं लगाया है, पता है क्या? स्माइल पर। यस सर, वो उसकी कमी है, हाँ है ना। हाँ सर, मुझे भी इतना सीरियस नहीं रहना यस है, स्माइल बना के रखना है। जब आप प्रवेश करें तब भी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑल कन्वर्सेशन, जाते समय भी, ये सब तहजीब है, मैनर्स है, ये आपको पॉजिटिव मार्क्स की ओर अग्रसर करेगा। तो ये ध्यान आपको देना पड़ेगा, ठीक है। सचिन बात कहना चाहेंगे कि जैसे हेयर स्टाइल में जो है, आप जो ऑफिसर का होता है लोग उस टाइप का आगे बाल जो है जो है आप करवा लेंगे। डोंट टेक इट कैजुअली, इट शुड लाइक एन इंटरव्यू दैट यू आर वेरी सीरियस। ऐसा नहीं कि ये लोग वाकई इंटरव्यू हो रहा है। आपके कपड़े का रंग भी जो है ना, ये नहीं चलेगा। सर, वाइट है मेरे पास सर। हाँ, ठीक है। वाइट और सर वो बाल एक्चुअली सर मैं ट्रेन पकड़ के आया हूँ इंटरव्यू देने सर, तो अरे कंघी रखा करो जेब में, इतनी छोटी कंघी। और वो सर ट्रेन लेट हो गई, उसकी वजह से कर नहीं पाया सर। और ये बात जो है ना, आप जैसे सर ने कहा कि जो हिंदी में पूछे इंट्रोडक्टरी करें, इफ़ यू आर नॉट दैट मच कंफर्टेबल यू कैन टेक द परमिशन ऑफ द बोर्ड, that can I express in English also, sir? Yes. So then they will permit you, you will go ahead with English also. Otherwise, you can mold interview to that direction that they start speaking I am English. equally comfortable in Okay. Hindi also. No, you are comfortable, that we have noticed. So for a suggestion, so that you don't feel discouraged by us. Our motive is not to discourage you, to promote you and to point out all those loopholes which we saw. Maybe it's very harsh for you and you'll take it otherwise too. No sir, I'm not taking it. Yes, it's so good, but that is for your good sake. Yes, sir. And you can take the permission so that they will understand that you can speak English also. That English is unavoidable in Bihar too. It's not that Hindi is the only one. English is accepted as the most common, officially accepted. So that is prevalent everywhere, even in Bihar. So that is why you can take the permission of the board. Okay, nothing wrong in using English, but with the permission of the board. Okay. Right. Okay. Here everyone is fluent, well versed Yes, sir. in English. Yes, sir. कुछ तो कारण होगा ना कि सही बात। ये नहीं हिंदी में किया जा रहा है। यस सर, सही बात। तो इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आप फ्लुएंट हैं हिंदी में तो ट्राई और लेवल बेस्ट टू गो विथ हिंदी, ये अच्छा रहेगा। और नहीं तो परमिशन लेके आपको बोलना है, अगर कंफर्टेबल है तो आप अंग्रेजी बोलिए, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं। मेंबर्स इसको अदरवाइज नहीं लेते हैं, लेकिन मैनर जानना चाहिए। Don't get confused. Don't get confused. Okay. और बी चेयरफुल। हम लोगों की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Okay.